तदा अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैं आपके लिए एक नई सी स्टोरी लेकर और आज हमारी स्टोरी इंग्लिश में है और उसका नाम है द लॉयन एंड द माउस। ओके, लेट्स स्टार्ट। और इतनी सर्दी है, सर्दी में मज़े की कहानी सुनने में ब्लैंकेट में घुस के बहुत मज़ा आता है, तो लेट्स स्टार्ट। One day, a lion was taking a nice nap in the warm sun. Nearby, a busy little mouse scurried about looking for berries, but all the berries were too high for her to reach. Then the mouse spotted a lovely bunch for berries that she could reach by climbing the rock below them. When she did, the mouse discovered that she had not climbed a rock at all. She climbed right on top of the lion's head. Oh, the lion did not like to be bothered while he was sleeping. He awoke with a loud grumble. Oops! Who dared to tickle my head while I am taking a nap? Roared the lion with the yawn. The mouse could see how angry the lion was with her, so she jumped off his head and started to run away. The lion grabbed for the little mouse as quickly as he could, but she was too quick and he just missed her. लुक ओवर हियर, यहाँ देखें ये बैरीज तोड़ रही है और इसको पता भी नहीं है कि मैं किसके ऊपर खड़ी हुई हूँ। वो अपने मज़े से अपनी बैरीज तोड़ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो स्टोरी इतनी है, ये थोड़ा सा मैं इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक जो है जोइया होती है, उसको जो है बेरीज बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। तो वो दरख्त से तोड़ने के लिए किसी चीज़ के ऊपर जो है वो चढ़ती है और जब वो उतरती है तो उसको एहसास होता है, पता चलता है कि मैं तो एक लॉयन के सर पे बैठी थी और वो लॉयन सो रहा था और वो मज़े की नींद सो रहा था कि उसकी नींद ख़राब हो गई, ठीक है। तो वो उठता है और इस चूहिया को देखता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखें, इसको पकड़ लिया है। The quick little mouse hurried to get away from the lion. She zigged and zagged through the grass, but the lion was always just one step behind. At last, the lion chased the mouse right back to where they had started. The poor little mouse was too tired to run anymore, and the lion scooped her up in his huge paw. ये देखें इन्होंने ह्यूज पॉ मीन्स बड़ा सा पंजा है, उसमें इस चूहिया को पकड़ लिया। Little mouse roared the lion, "Don't you know that I am the king of the forest? Why did you wake me up from the pleasant nap by tickling my head?" "I only wanted some lovely berries," said the mouse. "Just see how much you like it when I tickle your head," said the lion. "If you let me go, I'm sure I will be able to help you someday," pleaded mouse. अच्छा, जब शेर ने चूहे को पकड़ लिया पंजे में तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो और हो सकता है मैं जो हूँ तुम्हारे आगे कहीं काम आ जाऊँ अगर तुम अभी मुझे माफ़ करोगे। Let's see. Suddenly, the lion began to smile and then he began to laugh. "How could you, a tiny mouse, help me, the most powerful animal in the forest?" He chuckled. "Ha ha ha. That's so funny. I'll let you go this time." ओके, फिर उसने कहा ठीक है, वैसे तुम इतने बड़े शेर को की मदद कैसे कर सकती हो, इतनी छोटी सी चुहिया। वो बहुत हंसता है और कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। Then the lion laughed some more. Ha ha ha. He rolled over on his back, kicking and roaring with the laughter. Ha ha ha. The mouse had to leap out of his way to avoid being crushed, or the mouse ran away,
glad to be out of the lion's huge paws. और वो चूहा जो है मौका पाते ही भाग जाती है क्योंकि लॉयन जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ग्रास पे उल्टा सीधा होके चूहा पे उसको बड़ी हंसी आती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Still chuckling, ha ha ha. The lion got up and realized he was hungry. फिर वो हंसते हंसते उठ जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। He set out to find some lunch, and it was not long before he smelled food. As he walked towards the good smell, the lion was caught in a trap set by hunters. Oh! The lion was stuck in the strong ropes, and the more he struggled, the tighter they held him. Fearing the hunters would soon return, the terrified lion roared for help. Somebody help me, roared the lion. ये देखें बेचारा जो खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, कोई चीज़ ढूंढ रहा था खाने के लिए, तो अचानक से एक ट्रैप में फंस जाता है। ठीक, फिर देखें आगे क्या होता है। The mouse heard the lion's roar from far away. At first, she was a little afraid to go back, thinking the lion might be hurt her. But the lion's cries for help made the mouse sad, and she remembered the promise she made to help him. The mouse hurried to where the lion was tangled in the trap. अब वो चूहिया जो है उसको एकदम से याद आया कि मैंने तो लॉयन से प्रॉमिस किया था, अब मुझे लॉयन की आवाज़ आ रही है कि मेरी हेल्प करो। तो उसने कहा चलो मैं देखती हूँ कि वो कहाँ बेचारा फंसा हुआ है। ओ लॉयन, सेड द माउस, I know what it feels like to be caught, but you don't need to worry. I'll try to help you. I don't think there is anything you can do, said the lion. I've pushed and pulled with all my might. But then the mouse said, just hold still and I'll get to work. She quickly began chewing through the ropes with her small, sharp teeth. She worked and worked, and before long the mouse had chewed through enough rope for the lion to get out of the trap. यानी अब चिड़िया ने उस बेचारे लॉयन की हेल्प की और जो रस्सी थी उसको काटा अच्छे से और इतना काट दिया कि वो शेर उस ट्रैप में से बाहर आ जाए। माउस, I thank you for saving me and I'm sorry that I laughed at you before. Then the lion scooped up the mouse and placed her on his head. He carried her back to the berry bush. Mouse, he said, I want to reach up and pick I want you to reach up and pick one of those berries that you wanted earlier today. The mouse plucked the biggest berry she could find. The lion took the mouse off his head and held her in his paw. From now on, let's stick together, lion said. Okay, said the mouse, and they have been good friends ever since. It just goes to show that you don't need to be a big as a lion to have a lion-sized heart. The little mouse kept his promise to help the lion, and the lion put aside his anger to help the mouse. Together, they lived happily ever after as best friends. And that's the end of our story. यानी आपने देखा कि दोनों ने जो है, एक तो चिड़िया ने जो है अपना प्रॉमिस पूरा किया और दूसरा यहाँ पे लॉयन ने जो है, जिसको बहुत गुस्सा आया था कि उसकी नींद खराब हुई थी, तो उसने अपने गुस्से को काबू किया और उसको माफ़ किया। तो दोनों में जो है एक हमारे लिए मोरल है, वो ये है कि गुस्से पे भी काबू करना चाहिए और जो वादा होता है उसको अच्छे से निभाना चाहिए। I hope you like my story. Good night. Good night, sweet dreams. Allah Hafiz.